Hello, 10th standard. We are working with lesson number 10 of your SS textbook, that is your third lesson of geography. We already worked with 2 videos, so this will be my third video in which we will continue our lesson and we will understand remaining topics of this lesson. Okay, so we were on agricultural products of India. As per the seasons, the agricultural crops of India can be grouped into 3 categories. First one is Kharif crop, Rabi crop and Zaid crops. Now, we studied about Kharif crop and Rabi crop in lower classes, I think, right? So, let us recall once again. Kharif crops, that is monsoon. So, monsoon, we can directly come to know about which crops need more water might be grown in this season, right? So let us read this Kharif crops definition and what information is given in this. Crops which are taken during rainy season are called Kharif crops. Time for these crops is from June July to October November. सो ऑलमोस्ट रेनी सीज़न में ये क्रॉप्स ग्रो की जाती है. पैडी, मेज़, ज्वार, मिलेट, कॉटन, तिल, ग्राउंडनट, मूंग एंड मट आर खारिफ क्रॉप्स. सो दीज आर खारिफ क्रॉप्स, दैट इज़ मानसून क्रॉप्स. सेकेंड वन इज़ राबी, विंटर क्रॉप्स. क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग विंटर आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स. Time for these crops is from October November to March April. So October November से शुरू होकर March April तक rabi crops are grown. Then wheat, gram, barley, mustard, linseed, etc. are rabi crops. Linseed, that is अलसी जिसको हम बोलते हैं, which is very good for cholesterol, right? That one. Then Zaid crops, that is those crops which doesn't need much water, so can be grown during summer season. Crops which are grown during summer are called Zaid crops. Time for these crops is from March to June. Paddy, maize, groundnut, till, millet and fruits like watermelon, cucumber, muskmelon, etc. are Zaid crops. So during summer also these crops can be grown. Paddy, maize यहाँ पर भी दिए गए हैं, यहाँ पर भी. So don't get confused. It is like with irrigation facility these crops can be grown in summer season also. Okay. Now major agricultural crops. Due to the diversities in geographical conditions, climate, variety of land, the amount of land, rainfall, etc., different crops are grown in different parts of India. See, हमने पहले ही लेसन में, that is geography के सब पहले ही लेसन में types of soil पढ़ा. So there is diversities in soil. हमें बहुत सारी soils इंडिया में देखने को मिलती है and अलग अलग climate, अलग अलग weather देखने को मिलता है. So we can say कि in India there are so many crops which can be grown easily in these diverse soils. So on page number 78 you have this major agricultural products of India. So all these are, see, food grains, pulses, oil seeds, beverages, cash crops, condiments, fruits, vegetables. So सभी लगभग ये so many varieties names are written here, but these are not only this much, it's much more which are grown in agricultural activity. Okay, let's go ahead. Food grains. Grains are cultivated in about 75% of the total area sown, and about 50% of the total production comes from grains. Major food grains are as follows. So टोटल एरिया जितना एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है उसमें से टोटल 75% तो ग्रेन्स ही वो एग्रीकल्चरल लैंड ऑक्यूपाई करता है. एंड इट इज़ अराउंड
50% of total production comes from grains. Okay, now very first topic of grains we are going to study, that is paddy, rice. See, now here from here onwards we are going to study about these things. Okay, तो इसमें क्या है कि you will be studying, you will be getting basic informations about, right? So now we will start with paddy, rice. But before I start with this topic, I'll tell you one thing. In our last board exams of 10th standard, in SS paper, these two pictures were given. Okay, and these two pictures were given, nothing else. It was simply written, identify these pictures and write short note on it. It was like that. Okay, and that also of 4 marks. Means these pictures also you people have to see very clearly so that you can understand the topic well. Okay, so then you have to write about it. So last time many students have done this confusion and mistake, like they thought this one goes with rice and this is wheat, so they made mistake in this. So see that you people don't go to repeat this mistake again. So along with reading part, along with text part, please see, observe pictures also very well. Okay, so let's read now what they have written about paddy. Paddy is the most important crop. A large majority of the world and about half of the population of India uses rice. India stands second in the world after China in paddy production. Paddy is sown over 1/4 of the total sown area. That is almost 25% में तो paddy ही grow होता है. Paddy is the crop of torrid zone, hot and humid climate, minimum temperature of 20 degrees Celsius, fertile alluvial soil and more than 100 centimeters of rainfall are necessary for more production. In the regions of less rainfall in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, this crop is taken through irrigation. Okay, so अगर यहाँ तक हम पढ़े तो सी पैडी के बारे में आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखने को दिया जाएगा. सो सी यू हैव टू राइट शॉर्ट नोट एटलीस्ट ऑफ योर लेवल. Don't start writing short note like you people are still in first or second standard. Okay, rice is a staple food of this state or that state. Then rice, many people even start writing about rice can be eaten with dal and pulses, rice this, rice that. So no, you have to write systematically. लाइक कितनी प्रोडक्शन होती है राइस ग्रो करने के लिए, क्या क्या चाहिए, राइस इंडिया में कितना ग्रो होता है, इज़ इंडिया होल्डिंग फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस. तो इस तरह के पॉइंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे अपने शॉर्ट नोट में. नॉट लाइक सिंपली राइस कैन बी राइस इज़ ग्रोन इन फील्ड, तो राइस नीड मच वाटर टू ग्रो, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, यू पीपल हैव टू राइट एटलीस्ट ऑल दीज पॉइंट्स इन योर शॉर्ट नोट. ओके, सो अप टिल हेयर इफ़ आई डिस्कस, तो दे हैव डिस्कस्ड अबाउट द इन द वेरी फर्स्ट लाइन्स, तो दे हैव डिस्कस्ड कि ज़्यादातर इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो राइस कंज्यूम करते हैं. सो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ राइस की ही होती है इंडिया में. पीपल आर ईटिंग राइस मोस्टली. अब राइस ग्रो होते हैं टॉरिड जोन में. उसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, कितने टेम्परेचर पे उसका मतलब वेदर होना चाहिए, अलॉन्ग विद दैट व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज़ रिक्वायर्ड, हाउ मच रेनफॉल इज़ रिक्वायर्ड, ऑल दिस बेसिक इन्फॉर्मेशन इज़ ओनली गिवन हेयर इन दिस पैराग्राफ. अलॉन्ग विद दैट इट इज़ ऑल्सो रिटन अबाउट कि ड्यू टू इरीगेशन फैसिलिटी rice can be grown even in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh as well. More human labor is necessary for paddy cultivation. Yeah, paddy cultivation के लिए human labor बहुत लगता है. That is, if you observe this picture, तो एक एक प्लांट को, that is एक एक लीफ को अपने हाथों से सो करना पड़ता है. कहाँ पर?
उस फील्ड में जिस फील्ड में पानी ओवरफ्लो रखा जाता है, क्योंकि राइस ग्रो करने के लिए वो जो फील्ड है इट शुड बी विद वेरी सॉफ्ट क्ले, आई कैन टेल। ओके, जो एलुवियल मिट्टी है वो एकदम क्ले टाइप बहुत ही सॉफ्ट हो, और उसमें वर्कर 1 बाय 1 सेम डिस्टेंस पे वो लोग राइस के ये प्लांट्स सो करते हैं। देन फाइनली इतने हार्डवर्क के बाद उसमें रेगुलरली पानी देना, इरिगेट करना उस फील्ड को, उसमें पानी ख़त्म नहीं होने देना, दिस ऑल हैव टू बी टेकन केयर अबाउट। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, ओडिशा आर major paddy producing states. The crops are taken 2 or 3 times in West Bengal, Uttar Pradesh, Bihar, Odisha and Tamil Nadu. In Gujarat, paddy is grown in Surat, Tapi, Panchmahal, Ahmedabad, Kheda, Anand, Valsad district. Paddy requires more water. However, instead of keeping the paddy field fully under water, paddy is grown by irrigating through sprinkler using less water. ओके, सो पैडी पे ज़्यादा पानी की रिक्वायर्ड है तो उसमें इरिगेशन फैसिलिटी तो चाहिए ही चाहिए। अलॉन्ग विद दिस, ऑल ओवर इंडिया में पैडी कहाँ पर ज़्यादा ग्रो होता है, पैडी कहाँ पर ट्वाइस और थ्राइस टाइम ग्रो होता है इन अ ईयर, एंड इन गुजरात वेयर पैडी क्रॉप्स इज सोन। दैट इज़ ऑल इंफॉर्मेशन रिटन अबाउट पैडी इन दिस पैराग्राफ। ओके, नाउ wheat. Wheat is the second important crop of our country after paddy. Wheat is grown over 1/3 area of arable land of our country. Arable, that is agricultural land. It is the substantial food of the people of northwest India. So northwest India का तो ये मतलब important food है, substantial food है। Wheat is a rabi crop of temperate zone. It requires black or fertile loamy soil and more than 75 degree of annual rainfall, 75 inch of annual rainfall. Wheat can be grown in the regions of lesser rainfall with irrigation. Wheat cannot be grown in the areas receiving more than 100 inch rainfall. जहाँ पर बहुत बारिश होती है वहाँ पर वीट नहीं ग्रो हो सकता। वीट कैन बी ग्रोन इवन इन लेस रेनफॉल वाला एरिया ऑल्सो, एज इन दोज एरियाज वन कैन गो विद इरीगेशन फैसिलिटी। ओके, लेस लेबर फोर्स इज रिक्वायर्ड एज मैकेनाइजेशन इज इंट्रोड्यूस्ड इन वीट कल्टिवेशन। सो काफ़ी मशीन्स, काफ़ी मैकेनिकल टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं वीट क्रॉप ग्रो करने के लिए एंड इवन कट करने के लिए। सो उसके लिए ज़्यादा हैंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, मशीन्स कैन वर्क आउट। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द वीट प्रोडक्शन इज़ ऑलमोस्ट डबल्ड। Wheat cultivation is carried out mostly in Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh. These states contribute about 2/3 of the total population in national production. As there is irrigation facility in these states, there is more per hectare production. Due to the canal water in Punjab, there is abundant wheat production. That is why Punjab is also called wheat bowl of India. Okay, so पंजाब में ज़्यादा वीट ग्रो होता है एज वहाँ पर रिवर्स है और वहाँ पर कैनल सिस्टम बहुत अच्छा है। सो इरिगेशन के लिए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सो ओवर देयर, सो पंजाब इज़ डिक्लेयर्ड एज wheat bowl फॉर wheat production for India. Okay, now along with this, wheat is also produced in states of Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, West Bengal, etc. Bhalia wheat is produced in the Bhal region of Gujarat. You can underline these lines like Punjab is a wheat bowl of India or Bhalia wheat is produced in Bhal region of Gujarat. Besides, Mehsana, Rajkot, Junagadh, Kheda also produce wheat. Among all food grains used in the daily meals, wheat is the best. Many items like rotis, bhakris, sev, shiro, lapsi, laddu, sukhadi, that is god papdi,
bread, puri, cake, biscuits, etc. are prepared from wheat. Among all grains, wheat is the most nutritious. That is why wheat is also called as king of grains. So this is also one of the important line. Wheat is also called king of grains. So all over India में wheat कहाँ produce होता है? प्लस भालिया wheat कहाँ का wheat है? wheat ball किसको बोलते हैं? गुजरात में wheat कहाँ पर grow होता है? which items are made of wheat? and wheat is considered as a king of grains. So fully information is given. So आप लोगों को अगर wheat के related short note आए तो see that you should write these kinds of point in your short note. Okay, so you don't go with low level of your writing answer. You should write at least of your level. Now you can see this map. This map gives us straight lines with paddy and slanting lines with wheat. So where wheat is grown and where straight lines, that is rice is grown more, and over this side wheat is grown more. Okay, now jowar, bajra, maize and barley are major coarses grains grown in India. So these are coarses grains, we can tell cereals. ओके ये भी ग्रेन्स ही होते हैं, इनसे भी तो फ्लोर वगैरह बनाए जाते हैं, बट इनके जो फ्लोर है, इनका जो आटा है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता जितना वीट का यूज़ होता है, राइट। ज्वार इज़ द मोस्ट प्रोड्यूस्ड ग्रेन्स इन इंडिया आफ्टर पैडी एंड वीट। पैडी एंड वीट के बाद अगर कोई ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो वो ज्वार की होती है। दिस क्रॉप इज़ ग्रोन वेरी वाइडली इन द ड्राई एंड लेस रेनी रीजन of southern peninsular. Jowar is both kharif and rabi crops. Temperature between 20 degree to 30 degree Celsius, 125 centimeter of rainfall, black and loamy soil are favorable conditions. It is produced in Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat state. Maximum farming of jowar in Gujarat is done in Surat and Tapi district. So fully information about ज्वार is given. कितना रेनफॉल चाहिए, ज्वार इज़ खारिफ एंड राबी बोथ क्रॉप्स, कितना टेम्परेचर, किस तरह की सॉइल फेवरेबल है, कहाँ पर ज्वार ज़्यादा ग्रो होता है, इट्स ऑल रिटन इन दिस पैराग्राफ. ओके, फर्दर मिलेट वी कैन से बाजरा एज वेल. Millet is considered to be the grain of laborers. It is grown in the region having temperature between 20 degree to 30 degree Celsius. Rainfall between 40 to 50 centimeter and light sandy soil. Major states producing millet are Rajasthan, Gujarat, Uttar Pradesh and Maharashtra. The Banaskantha district of Gujarat leads in the production of millet in Gujarat. So this is what मिलेट ग्रो करते हैं. तो मिलेट में मिलेट के लिए ऐसी सॉइल चाहिए जिस विच इज़ लिटल बिट सैंडी एज वेल. देन मेजर विच स्टेट्स आर ग्रोइंग मिलेट मोर, दैट इज़ ऑल्सो रिटन इन दिस, दैट इज़ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. इवन गुजरात में सबसे ज़्यादा अगर मिलेट होता है तो इट इज़ डन इन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट. Okay, so we will continue from maize from my next video onwards. Till this, please go through this whichever topic we studied today and in earlier my both the videos. Okay everyone, so take care and continue studying well everyone. Bye bye.